Now we were discussing about the uses of the mini grid companies. Basically, mini grid companies, छोटा companies हो गया, they are offering a various range of services from mobile telephony, irrigation, agro processing, e-mobility, etc. We have seen that in inaccessible areas where the conventional grid cannot enter, the mini grid can be used for uh, giving electricity to the solar water pump or even small mobile tower or small portable hospital, etc. And it will lead to the economic prosperity of the locals. तो इसके लिए there are approximately, according to this data, 700 solar mini grid that are being owned and operated by a handful of private companies. And it is also talking about the international cooperation such as ISA, International Solar Alliance, and through the initiative of Global Solar Facility, that is using the energy-rich countries around the equatorial region to fund this solar project. But the problem is that it needs around 220 billion to 500 billion to establish solar mini grids around the globe in the equatorial region. और इसमें बेनिफिट एक और दिया हुआ है कि कॉस्ट ऑफ द सोलर पीवीस photovoltaic is now very competitive pricing at around $24 per megawatt hour. This much is, yeah. We can move the next article. If you can give any input, Mansi. नहीं ठीक है, that's all Ashik. The next article talking about the Indian PG student in US that has increased to 63%, overtaking the China. Chinese students is around 1,02,000, whereas Indian student have crossed 1,65,000. This showcases the issue of the brain drain and also the increasing in the economic prosperity in India among the upper middle class and upper middle class people. They are now aspiring to the US and developed countries such as Germany, UK, France, etc. for higher education. Many of them are coming towards India also, but that is a very slow process over the years. And I also want to comment that this also showcases the increase in relationship between the both countries and easing of the H1B visa principle and how they are giving the green cards to the children, the student and also the family. तो ये कोई भी हो सकता है. The Ministry of Home Affairs extended the ban on the 7 meaty extremist group under the UAPA. UAPA Act, basically it can be used to designate terrorism on the individual also and also the to the association. पहले सिर्फ आप एक एसोसिएशन को बैन कर सकते थे, तो क्या होता था कि दे वर यूजिंग द लूप होल एंड दे वर फॉर्मिंग अ डिफरेंट नेम ऑफ एसोसिएशन तो बैन और को आउट मैनुअर करने के लिए. मीटी आप इंडिविजुअल कर कम्युनिटी सकते. माइनॉरिटी है, क्या मेजॉरिटी है? कौन से रीजन ऑफ मणिपुर में हमें मिलते हैं मीटीज? Meeti resides in basically in the plains region in Manipur, and they are not majority, but they are approximately 40 to 50% of the लेकिन हाँ, स्टेट ऑफ मणिपुर Manipur. में तो दे कंप्राइज मेजॉरिटी पॉपुलेशन, एथनिक जो हाँ 40 to 45, हाँ उसी के आसपास रहते हैं. बाकी नागाज और बाकी लोग के जो कुकीज 20 कम्युनिटी. 30% कुकीज नागाज एक्सेट्रा. यस. Easing wheat and rising rice. The global impact of action has taken by the large exporters of agriculture community. Russia is flooding the world with cheap wheat have softened its prices. After the Russia-Ukraine war, during the Russia-Ukraine war, the wheat prices was increasing, and where India had put restriction on the wheat, and it was giving aid to the countries specified through the government vendor. For example, Egypt हो गया, फिर other Arabian countries. But now after, not after, but after easing of the war in Russia and Ukraine, Russia have flooded the world with the cheap, because it is one of the largest producer of the wheat in the world, and the prices is
reducing, and whereas with respect to rice, it is increasing. So both the prices have been impacting the overall price, that is headline inflation. इसमें food and fuel भी रहते हैं headline. तो औशिक, आप इस पे क्या स्टैंड लोगे कि रशिया तो वीट प्राइसेस अगर इंक्रीज हो रहे थे, इट इज सप्लाइंग मोर ऑफ चीपर वीट इन दी मार्केट सो दैट प्राइसेस कूल डाउन हो जाएं, बट इंडिया इज डूइंग एग्जैक्टली द ऑपोजिट इन केस ऑफ राइस, क्योंकि हमने राइस एक्सपोर्ट्स पे बैन लगा दिया है। सो इस पे आपका क्या टेक होगा? हाँ, इसमें बेसिकली इंडिया फॉलोज द इशू ऑफ सॉवरेनिटी एंड national interest based on the rice principle, because India maintains that food security of its citizen is primary importance rather than earning few dollars or few money from the export. तो हम लोग जब एक्सपोर्टर भी राइस के हैं विद रिस्पेक्ट टू बासमती एंड तो लेकिन तब भी हम लोग डिपेंड करते हैं कि जो मैक्सिमम ग्रेन स्टॉक अवेलेबिलिटी होना चाहिए एट एनी टाइम, उसके बाद ही हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं ओवरऑल। यहाँ तो पे हम इसलिए ये इस टेक। कॉन्टेक्स्ट में भी बात कर सकते हैं कि रशिया वन ऑफ द मेजर सप्लायर्स है वीट का, बट राइस का इंडिया टॉप सप्लायर नहीं है। तो इवन जो शेयर में भी डिफरेंसेस है, इट इज नॉट जस्ट कि इंडिया ने राइस एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया इसलिए इंटरनेशनली प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं। हाँ, जैसे लिखा हुआ है कि नरेंद्र गवर्नमेंट बैंड export of all white non-basmati rice. Only हम्म। basmati and parboiled non-basmati rice shipment are to be permitted, and that too with the subjected to the $950 export price and 20% duty. India's position is similar to Indonesia and Malaysia on palm oil, and Ukraine and Russia and sunflower oil. तो बेसिकली हर एक कंट्री के पास एक बेसिक मिनिमम अमाउंट ऑफ वो एक होता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट दैट दे वांट टू सिक्योर, और दे वांट टू गिव डायरेक्शन कि कहाँ पर इसको एक्सपोर्ट करना चाहिए। तो जैसे रशिया का सनफ्लावर ऑयल, रशिया स्टैंड इज वेरी कंजर्वेटिव इन सनफ्लावर ऑयल, जैसे मलेशिया एंड इंडोनेशिया का पाम ऑयल में भी सेम रहता है, वैसे इंडिया का राइस के हिसाब से। तो वही पूरा। तो बेसिकली तो ट्रेंड्स जो होता है इट इज पब्लिश्ड बाय द यूएन फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन प्राइस फूड इंडेक्स, फूड प्राइस इंडेक्स, इसको लिख सकता हूँ। ठीक है। ये बात कर चुके हैं कि जीपीएस एंकलेट कैसे वर्क करता है। तो प्रवेश को बताया जाता है कि एक छोटा सा डिवाइस होता है, यहाँ पर से पहन रहे हैं ना, तो आप इसको पहनाते हो, ऐसे जीपीएस कॉलर यूज होता है फॉर एग्जांपल कुनो पल नेशनल पार्क चीताज में किया गया था कि कॉलर होता है, गला पे पहनना होता है, वैसे ही इसमें एंकलेट पे, एंकल मतलब एंकल के ऊपर में। और इसको आप काट नहीं सकते, ऐसे काटोगे तो टैम्पर प्रूफ है, अगर आप काटोगे तो अलर्ट किया जा सकता है हाँ। पुलिस को। तो ये, तो इसका क्या लीगल पोजीशन है। तो पहला एक क्रिटिसिज्म है कि इट इम्पैक्ट्स द सेफ्टी, इट इम्पैक्ट्स द डेटा प्राइवेसी ऑफ द इंडिविजुअल। तो ये होता है एक तरह से कंसर्न कि ह्यूमन राइट्स इज आल्सो इंक्लूडेड राइट टू प्राइवेसी। लेकिन ये भी बात है कि राइट टू प्राइवेसी सब्जेक्टेड टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। तो आई यस। थिंक दिस कैन बी वन स्टेप। जैसे लिखा है ना कि राइट एक्टिविस्ट सेज दैट ट्रैकिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग ए वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी। हाँ, बट दिस लेकिन इज यहाँ बात हो रहा है कि टेररिज्म अंडर नॉट। यूरोपिया, तब तो ये एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन हो सकता हाँ, बिकॉज ये स्टेप भी जो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में ही है। है। वंस अपॉन अ टाइम, मतलब ये प्लान है नहीं अभी, लेकिन ऐसे पहले हुआ था कि सुएज कनाल यहाँ से यहाँ पर है, तो देयर वर टॉक्स गोइंग ऑन दैट गल्फ ऑफ अक्वाबा दैट इज बिटवीन द इजिप्ट इसराइल, इसराइल यहाँ एंड होता है एंड दिस इज सऊदी अरेबिया, और इसराइल सऊदी अरेबिया एंड इजिप्ट के बीच में गल्फ ऑफ अक्वाबा है। यहाँ से इजिप्ट के थ्रू गाजा स्ट्रिप से जाके रेड आप ज्वाइन कर सकते हैं मेडिटेरियन सी। तो 193 किलोमीटर होना था ये, नहीं नहीं 193 तो सुइस कनाल का। इट अभी वाज अ बेसिकली वेस्टर्न ऑल्टरनेटिव टू बाईपास द सुइस कनाल बिकॉज ऑफ द, उनको पता था कि कभी ना कभी इम्पैक्ट कर सकता है। जैसे 1965 65 के समय में जब नेशनलाइजेशन ऑफ सुइस कनाल हुआ था अंडर द नासिर अब्देल नासिर ऑफ इजिप्ट, तो वो चाहते थे कि अलग से रहे, क्योंकि 193 किलोमीटर इट इज अ वर्ल्ड बिगेस्ट शिपिंग बॉटलनेक रिमेन्स
पेलनी कंजेस्टेड, उसमें एवरग्रीन जो शिप था वो भी स्टक हो चुका था, इसके कारण $9.6 बिलियन ऑफ गुड्स एवरी डे it caused traffic jam. Suez Canal was also focal point between the 1967 and 1973 Arab-Israeli war and was shut down from 1967 to 75. It cost several billions of dollars of extra expenditure by the Western countries. तो इसके कारण तो ये बेन ग्यूरिन कैनाल, तो ये बेन ग्यूरिन कैनाल नाम दिया गया था इसको। तो इट हैड सर्टेन लिमिटेशन। तो यहाँ दिया हुआ है कि लिमिटेशन रखिए, लिमिटेशन है टेरेन, आपको टेपोग्राफी, आपको इतना जगह आपको बेसिकली ड्रिल करना पड़ता है या फिर आपको हटाना पड़ता है, तो उतना पॉसिबल नहीं था। तो अगर वही बात, दूसरा बात है कि अगर शिप को अगर यहाँ से यहाँ जानी है सुइज कैनाल, इट इज शॉर्टेस्ट रूट देन कंपेयर टू द गल्फ ऑफ अक्वा एंड देन बेन ग्यूरिन कैनाल। और यहाँ तो पे शिप क्यों नहीं सिक्योरिटी जाएंगे यहाँ से? पर्सपेक्टिव की हाँ, भी बात कर सकते हैं, सिंस इजराइल और गाजा स्ट्रिप एक वॉलेटाइल रीजन हाँ, भी है, तो हाँ, हाँ, तो वोलेटाइल सेफ रीजन का। पैसेज। दूसरा दिया हुआ सस्टेनेबल सॉल्यूशन फॉर द स्टबल इज टू क्रिएट अ मार्केट फॉर पैडी स्ट्रॉ, जैसे हमने बात किया था इसके ऊपर ना, कल, हाँ, कि एग्जैक्टली। कैसे कन्वर्ट वेस्ट टू वेल्थ, ये कर सकते हैं। और से कुछ दिया नहीं है। इसमें कोई एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ कि कैसे हम लोग वेस्ट टू वेल्थ कर सकते हैं। हाँ, एक वी तो विल टॉक मतलब अबाउट वेस्ट दिस टू वन वेल्थ में, लेटर। हाँ, वन तो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट हो गया, और हमने एक बात करी थी रिसाइकलिंग प्लांट्स में स्टार्टअप्स कैसे आ रही हैं आगे, तो वो भी एक वेल्थ ही हो जाएगा, वेस्ट एज अ वेल्थ। फिर ये बात कर सकते हैं, एनजीओ और जैसे नॉन स्टेट एक्टर्स, इंडिया एंड एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक साइन $400 मिलियन लोन पैक्ट टू बिल्ड हाई क्वालिटी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। ऐसे हम लोग बात करते हैं कि नॉन गवर्नमेंट एंटिटी जो लोन दिया जाता है, एड दिया जाता है इंडिया को, पेपर जीएस पेपर 2 का पार्ट है। तो अमृत मिशन, जैसे अमृत 2.0 दैट इज फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, इसके तहत भी। और बाकी जब recycling, treating of the water, sewage for non-domestic uses, etc. Ground maintaining sustainable groundwater levels and development of the well-planned cities. इसको करने के लिए कैसे बॉन्ड दिया जाता है। तो आई थिंक वी हैव टेकन अप मानसी। ठीक है। Okay, so Pravesh, you can start with Financial Express. So now we are taking the Financial Express newspaper and retail inflation. So this is a information that how the inflation is getting up in the economy, and So Pravesh, रिटेल इन्फ्लेशन के लिए कौन सा इंडेक्स यूज करते हैं हम? CPI. ठीक है। और WPI में क्या सर्विसेज पार्ट होती है, मतलब सर्विसेज एंड गुड्स? सर्विस नहीं होता है। Nine services because that is a wholesaler. So हाँ, तो that सर्विसेज is कर सकते हैं। cannot include. यहाँ पे जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है इन दी साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजीज. So 70% organizations are actively planning to leverage this technology, underlining the critical need for proactive and effective defense measures. So Pravesh, what is generative AI? No, Mansi, you please explain. I'm not aware of this. एक बार सोचो तो सही, जनरेटिव टर्म यूज कर रहे हैं तो उससे ही है इसका मीनिंग एसोसिएटेड, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ इट. So generative in the sense that to generate, the
basically लाइक सपोज आपको कोई पिक्चर प्रवेश चाहिए तो आई विल जस्ट एंटर कि व्हाट हम्म, काइंड ऑफ पिक्चर यू नीड, तो उस तरीके की पिक्चर ये फॉर्म करके आपको एआई दे देगा, या ऑडियो चाहिए, कोई वीडियो चाहिए, सो दैट इज इट इज कॉल्ड जनरेटिव इन नेचर, इसको इट याद करने के तरह जनरेटिव जनरेट करना। कौन करेगा जनरेट? एआई करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेट करेगा। क्या चीज़ जनरेट करेगा? तो आप जो भी चीज़ पूछोगे उससे, आपको कोड जनरेट करना है, एल्गोरिदम जनरेट करना है, आपको वर्ड जनरेट करना है, चैट जीपीटी एक एग्जांपल हो गया। फिर आपका एग्जांपल एक पिक्चर जनरेट करने वाला हो गया, फिर मूवी जनरेट कर सकता है, उसमें यूट्यूब का सबटाइटल जनरेट कर सकता है, ऑडियो जनरेट कर सकता है, गाना जनरेट, सॉन्ग्स जनरेट कर सकता है, सब राइटिंग जनरेट कर एक्सेट्रा, सब कर okay. सकता है। तो बेसिकली वो क्रिएटिव वर्क। हाँ अच्छा। डीप फेक भी इसी में आएगा, क्योंकि उसमें भी क्रिएट ही करते हैं। Okay, so now the rebidding is happening for the advanced battery storage, and PLI scheme is gonna have this. So the government will re-invite bids for the production-linked incentive schemes for the manufacturing of 20 gigawatt hours advanced chemistry cells as early as this month, and it will be under the expression of interest. The manufacturers will be invited under this scheme. The national program on advanced chemistry cell battery storage. There's a plan which came in 2021 to achieve the manufacturing capacity of 15 gigawatt hours in this chemical cell generation. And in the first round of bids, Ola and Hyundai, these are the automobile companies who have invested प्रवेश and who have बैटरी स्टोरेज हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? for the energy security. एनर्जी सिक्योरिटी तो ठीक है, लेकिन और मतलब कि बैकग्राउंड में अगर आप रेन्यूएबल एनर्जी से इसको कनेक्ट करके देखो तो क्यों इम्पोर्टेंट है स्टोरेज? लाइक सोलर एनर्जी की हम बात करते हैं, तो सोलर एनर्जी को स्टोर करने के लिए हमारे पास सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो वो एनर्जी सिक्योरिटी को वहां से डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। एंड इवन ईवीज में भी ये हमें हेल्प करेगा इन टर्म्स ऑफ कि ईवीज में ऑब्वियसली जो बैटरीज लगाई जाएंगी, सो इनकी भी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को हम ज्यादा पुश कर रहे हैं, क्योंकि लिथियम के लिए हम इंपोर्ट डिपेंडेंट है, तो वो जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स है Yeah, again, yeah, कनेक्टेड टू obviously दैट। towards yeah, to thrust towards the renewables and to reduce our dependence on the fossil fuels. तो ये एक वन ऑफ द स्टेप्स है Yeah, टैक्स in that regard. ईवी इंपोर्ट्स। So where do we get So, iron in India? sorry, Mansi. Where do we get iron ore in India? I think the eastern belt of India is full of iron ores. Because we have the छोटा states नागपुर like प्लेटो। pardon, Ashok? छोटा नागपुर प्लेटो Hmm. mostly. I am mostly Yeah. from the Odisha, and छोटा नागपुर Odisha highest iron. Yeah, so that is the largest, but yes, we have the expansion of iron ores in various states in the eastern belt. When we talk about the Jharkhand, Bihar, West Bengal, so northern Andhra. So, Hmm. and And that is basically Hmm. मानसी ये ले लेते हैं, palm oil is basically imported from Indonesia, Malaysia and Thailand. Sunflower is imported from Ukraine, Ukraine, Russia. हाँ रशिया। और सोयाबीन तीसरा ऑयल, सोयाबीन वॉज सोर्स फ्रॉम अर्जेंटीना एंड ब्राजील। तो ये बस याद रखो। Coal के लिए coal imports increased by 4%, so we're importing coal. Coal mines auctions, number of coal mines इंडिया में basically कौन सी like locations हमें पता होने चाहिए, prominent locations of coal mining in India, and we have a dedicated ministry of coal also. And the coal mines auctions are basically done, and the allotment are done on the basis of lottery. And again, that is also in the digitalization app. We are unable to specify the name as for now, but I think that policy, we have a policy regarding that. And we have coal mines special provisions at 2015 and MMDR at 1957 for the commercial or coal auctions. So this much we can This take is from here. basically for the first time happening for the commercial coal mines. तो अभी तक कोई commercial coal mine नहीं है इंडिया में। Yeah.
banks are targeting to double-digit growth in the corporate book. And what are the various steps they are taking? They are increasing the credit availability, adhering to the standards of the RBI, then giving incentives. Then the infra production linked incentive schemes is also linked to the credit availability, focusing on the maintenance of the checkbook accounts and proper um, uh, I think transaction rules. तो यहाँ पे प्रवेश डबल बैलेंस शीट चैलेंज क्या है इंडिया के लिए? Double. ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम. I think one is the when the NPA problem rise on one hand, and on the second, I think the current and fiscal account deficit, I think. ठीक है, औशिक आपको बोलना है कुछ? वो है मास फिस्कल नहीं, ये डेफिसिट दो चीज, करंट ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम होता है और ट्विन डेफिसिट प्रॉब्लम होता है एक. हाँ सो ट्विन डेफिसिट में डेफिसिट फिस्कल वाले डेफिसिट एंड में करंट डेफिसिट. गवर्नमेंट और बैंक्स होता है, और बैलेंस शीट में बेसिकली बैंक्स और कॉर्पोरेट्स की बैलेंस शीट की बात होती है. ठीक. So now this MD of Kotak is saying that we don't want some months, we want 5 years. So okay, so that is not as important. And तो स्टॉक ऑप्शंस क्या होते हैं? एंड क्यों हम बोल रहे हैं कि इस एक्साइटमेंट पॉजिटिव भी है, कंसर्न्स भी है, बिकॉज वी आर सीइंग कि स्टॉक ऑप्शंस में ट्रेडिंग इज बूमिंग. I think स्टॉक stock ऑप्शन options इज are basically, बोलो अभिषेक, आप बोलो. stock option is basically buying at a predetermined prices in the future date. Otherwise option trading हो गया ना stock option. ऑप्शन, हाँ, लेकिन ऑप्शंस और फ्यूचर्स दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं डेरिवेटिव मार्केट के. मतलब कि जो मेन शेयर है किसी भी कंपनी का, वो इक्विटी मार्केट हो गया, एंड उसके बेसिस पे जो स्टॉक्स का, शेयर्स का जो प्राइस है, उसके प्राइस के बेसिस पे ऑप्शंस का प्राइस और फ्यूचर्स का प्राइस डिटरमाइन होता है. तो इसलिए हम उसको बोलते हैं डेरिवेटिव है वो, जो मेन Derivative इक्विटी market. के प्राइस से डेरिवेट होता है उनका प्राइस. सो इट इज बेस्ड ऑन दैट. और ये यहाँ पे वी आर सीइंग एक्साइटमेंट ऑल्सो कंसर्न्स, क्योंकि फर्स्टली एक्साइटमेंट है, ठीक है, आप ट्रेडिंग इंक्रीज हो रही है, मोर नंबर ऑफ पीपल आर गेटिंग इनटू स्टॉक ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स ट्रेडिंग. बट कंसर्न क्या है, जो बहुत हाईली वॉलेटाइल, जितना आप सोच सकते हो, ऑप्शंस और फ्यूचर कंपैरेटिवली फ्यूचर्स थोड़ा सेफ होता है जब आप ऑप्शन से कंपेयर करते हो, क्योंकि वो लेस वॉलेटाइल है. बट ऑप्शंस दे आर हाईली वॉलेटाइल, मतलब देर आर more chances of risk if you are not basically completely aware, completely skilled कि options में trade कैसे करते हैं, invest कैसे करते हैं. You don't know कि hedging कैसे करते हैं अगर आप options trade कर रहे हो. तो there are like 99% chances होते हैं कि आपको loss ही होगा अगर आप option trade में enter कर रहे हो. So एक difference अगर मैं बोलूँ, options futures एक side और equities एक side. तो equities में आप एक single share भी buy कर सकते हो, but that is not the case जब आप ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स की बात कर रहे हो. तो उसमें एक, आई वुड से, एक सेट ऑफ ऑप्शंस होता है. सपोज अगर आप बैंक निफ्टी के ऑप्शन पे ट्रेड करोगे तो you आप can say bundle of equity. बैंक निफ्टी में, हाँ, अगर आप ट्रेड कर रहे हो उनके ऑप्शंस में, तो दैट इज अ इंडेक्स, तो उसमें आपको एटलीस्ट 25 शेयर्स बाय करने पड़ेंगे. तो इन लॉट्स, मतलब लॉट असाइन होते हैं ऑप्शंस और फ्यूचर्स में. सो दैट इज वन डिफरेंस. एंड प्लस जो आपको लेवरेज मिलता है इन टर्म्स ऑफ मोर अमाउंट ब्रोकर की तरफ से, कि आप लेस अमाउंट में ज्यादा ऑप्शंस बाय कर सकते हो. सो एक वो चीज भी रहती है. सो सिंस, मतलब लोगों को ये लगता है, रिटेल इन्वेस्टर्स को ये लगता है कि इसमें प्रॉफिट भी, जो ऑप्शन रहता है वो बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाने का भी एक रहता है. वो मतलब अवेलेबल ज्यादा ऑप्शंस में लगता है लोगों को, बट उसका ऑपोजिट भी ट्रू है. लॉस भी इमीडिएटली हो सकता है इसमें. I think that is subject to a limited time period within which you have to buy and sell.
otherwise your money मतलब which you ये invest. हाँ, जो ऑप्शंस का रहता है, लाइक वीकली एक्सपायरी भी होता है, एक ऑप्शन जो रहता है उसमें स्ट्राइक प्राइस मेंशन होता है उसके नेम में, प्लस एक्सपायरी डेट। तो 1 वीक एक्सपायरी वाले भी होते हैं जो हर वेंसडे को एक्सपायर होते हैं। इन केस ऑफ इंडिया पहले वो हर थर्सडे को एक्सपायर होता था। एंड उसका मंथली भी रहता है, लाइक एक मंथ के लिए एक ऑप्शन भी अवेलेबल रहता है। फ्यूचर्स के केस में 3 महीने के लिए एक फ्यूचर अवेलेबल रहता है, बट इक्विटी में इट इज ओपन एंडेड। Okay, think पहले नहीं, what is Desh bill is badly, why it is badly needed and why it is delayed. So Pravesh, you can take this up. Okay. So what the Desh bill is, basically it is expected to replace the Special Economic Zone Act and to increase the focus over the export and make in India. It will help in providing a clear single window clearance and simple regulatory regime focused on high quality infrastructure for the corporate sectors and the corporate companies to come in and to establish their business based within the premises of India. And it could clear the pitch of known hub enterprises. And the Desh bill is basically brought by the Ministry of Commerce and the Ministry of Finance. SEZ Act क्या है? It was set up, the very first special economic zone under this act was set up in Kandla, that is in Gujarat, in 1965, and those are passed up. We have 7 such SEZ, different enclaves में from the domestic tariff area, and वहाँ यहाँ पर कुछ इंसेंटिव्स होते हैं, जैसे इनकम टैक्स के कुछ लेस प्रोविजंस होते हैं, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स होता है दैट इज इम्पोज्ड ऑन देम एंड ग्रेटली रिड्यूस देयर अट्रैक्टिवनेस. Then income tax benefits have been provided under the SEZ companies. Duty free import होता है, domestic procurement of goods and exemption of integrated goods and services tax. So basically direct and indirect tax के जो provisions होते हैं वो somewhat linear होते हैं in the SEZ, which provide a healthy environment for the corporates to establish their base in the early years and leads to export and employment generation. Then what SEZ want? So basically, they are not able to sell the domestic market without paying duties, and similar to duty-free import from other countries, which we have FTAs. And what are the performances of the India's SEZ so far? So at present, 425 SEZ have been formally approved by the government, and total investment is 6.45 trillion US, I think, rupees. And employment जो है वो 281 million persons. So 281 मिलियन लोग जो हैं उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के अवसर यहाँ पे मिल रहे हैं. उसके बाद 6.45 ट्रिलियन की जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो है. देन सेमिनल कंट्रीब्यूटर है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ग्रोथ में. टोटल जो एक्सपोर्ट होता है वो 155.8 बिलियन का है, एंड मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो दैट इज 94.2 बिलियन, sorry, 61.6 billion, and services export is 94 billion. So the largest is the services export, and that shows that how the India is heading towards the service majoritarianism and service-based industrial base. A total of 270 SEZ are exporting at present. ठीक है, Out of this, डेटा हो गया बहुत ज्यादा. यहाँ पे एक और जो कंसर्न हमने मिस किया वो ये कि SEZs करंटली इंडियन रुपीज में पेमेंट एक्सेप्ट नहीं कर सकते. तो एक ये भी उनका कंसर्न था कि दे आल्सो वांट टू एक्सेप्ट पेमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ इंडियन रुपी. सो दिस हैज बीन मेड अ पार्ट ऑफ द देश बिल. मतलब SEZs जो फ्यूचर में यूनिट्स क्रिएट किए जाएंगे, दे वुड बी एबल टू ट्रांजैक्ट इन इंडियन रुपी ऑल्सो. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, एक जो प्रोविजन था, दे हैड टू मेंटेन बेसिकली the net positive foreign exchange requirement. So they also basically a kind of restriction, yeah, बोल सकते हैं, as a condition was imposed on them. So that also hampered, or they made SEZs less attractive for the investors. So this was all about this, and now we'll move to the Hindi newspaper. Okay, Divya, आप ये start कर दो. Okay.
डिस्कस कर चुके हैं। ये शॉर्ट टच पे होता है ये कि ओपन हाँ डेस्कटॉप वो दिया हुआ है डाटा की 2012 से लेके 13 से लेके 23 तक 12% से लेके 25%, यानी कि डबल हो गए स्टूडेंट्स जो पीजी करने के लिए यूजी करने के लिए इंडिया से बाहर अमेरिका में जा रहे हैं, अगर हाँ, उनका मतलब एक नंबर। लास्ट 10 साल के वेल अंदर एजुकेटेड। डबल हो गया है। यहाँ पर ये कि जो यूनिवर्सिटीज के कुलपति बनाए जाते हैं उनकी एज या तो वो 70 साल तक होते हैं या फिर वो 5 साल के लिए नियुक्त किए जाते हैं ठीक है। टाइम पीरियड। मेरे को जैसे इन्होंने दिया हुआ है कि एटीपीओ ने एंटी स्मोक गन, स्मोक टावर, स्मोक इरिगेशन या फिर स्प्रिंकल्स, इन सब का यूज करना है कि ताकि पोल्यूशन को कम किया जा सके। इनके भी तो कुछ इम्पैक्ट होते होंगे कि इस तरह का लिक्विड इन स्प्रेज में यूज किया जाता है, उनके एनवायरनमेंट पर लेकिन इफेक्ट नहीं यहाँ पे होता। प्रॉब्लम ये है ना दिव्या कि एयर पोल्यूशन है बहुत बड़े लेवल पे, इनकी जो रीच है मशीन्स की बहुत शॉर्टर एरिया को ही कवर करती है, तो इनका कोई ऐसा मेजर या बड़ा इम्पैक्ट नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि प्रॉब्लम जो वो बहुत बड़ी है ना। सो इसीलिए मतलब ये नहीं, इतनी ज्यादा उसके इफेक्टिव अंदर नहीं है। लिक्विड वगैरह यूज किया जाता है, उनका एनवायरनमेंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, या इस तरह का यूज किया जाता है जो सिर्फ। ऐसा कुछ मेजर हमें फायदा नहीं देखने को मिलता है। मतलब अब जो स्मोक गन्स भी हैं वो कहाँ तक कितना इम्पैक्ट कर लेगी आसपास के। स्मोक जो टावर बनाया गया था उसका भी हमने बात करी थी कि सिर्फ मैक्सिमम वो 300 मीटर्स के आसपास का जो उसका सराउंडिंग एरिया है उसमें भी वो सिर्फ 15 से 20% तक ही इम्पैक्ट करेगा। सो स्मोक टावर का अगर इतना इम्पैक्ट है तो आप सोच सकते हो मशीन गन्स का कितना होगा। ये था कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मुक्त रेबीज के लिए 36% जो डेथ होती है वो भारत में होती है। इसके लिए सड़क हादसे के लिए 22% जो जानवर से रिलेटेड होते हैं उसकी वजह से जानवर रीजन होते हैं उनका। इसमें इन्होंने जो लिए हुए वो है कि टेस्टिंग, बंधेकरण, जुर्माना या इनके रखने के लिए कुछ ऐसे स्थान प्रोवाइड कर दिए जाते हैं जहां पर ये जानवर रह सकते हैं। लेकिन फिर भी इनके लिए इतनी जो सुविधाएं हैं जो उन्होंने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जो चीजें दी हुई है कि इस मानक तरह पर ये चीज प्रोवाइड होनी चाहिए, वो चीज प्रोवाइडेड नहीं होती है। तो इनसे रिलेटेड देखा जा सकता है कि जो गाय है या फिर जो अन्य जानवर है उनको रखा जा सकता है, वो जो जैविक खेती है उनमें हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि प्रति हेक्टेयर में 161 किलोग्राम रासायनिक यूरिया यूज होता है, उसकी जगह पर जो वेस्ट है उसको यूज किया जा सकता है जो जैविक खेती में हेल्प कर सकता है। जिसका मिशन 2025 तक 10% बढ़ाने के लिए रखा गया है कि 10% तक 10 लाख हेक्टेयर तक क्षेत्र में जैविक खेती बढ़ेगी 2025 तक। तो उसमें के बढ़ाने में इनकी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है कि ऐसी जगह बनाई जाए जहां पर इनको रखा जा सके, और जो कि दूध के अलावा और चीजों में जो इनके वेस्ट है उनसे जैविक खेती के लिए में हेल्प दी जा सकती है। तो उस चीज के ऊपर बढ़ावा दिया जा सकता है उनको। इनके लिए अगर हम पशु क्रूरता नियम 1960 के साथ साथ जीव जंतु कल्याण बोर्ड का स्थापना की गई थी, और अभी चेंज किया है इन्होंने भारत केंद्रीय सरकार पशु जन्म नियंत्रण 2001 को चेंज कर इन्होंने 2023 में नया अधिनियम लागू किया। ठीक है। ठीक। लास्ट में अब बस वो ले लेते हैं, समराइज कर देते हैं। सो औशिक और प्रवेश आप लोग पहले स्टार्ट कर दो, जो हम ठीक है। समरी कर देते हैं जितने टॉपिक्स आज हमने डिस्कस किए इन शॉर्ट 1 और 2 सेंटेंसेस में हर एक टॉपिक। हाँ ठीक है। Okay, Mansi. Now we are concluding the areas which we have discussed till now. First of all, we have started with the base effect, and we have discussed that low base means low growth in GDP, and high base means the and GDP growth, for example, post-COVID was very high because of the low base effect. The low base effect and high base effect, we discussed that. Then regarding the fire code, we discussed that mock drill is important, fire resistant concrete, then protocol, etc. Then regarding the pollution, we discussed how the pollution is depends on the dust, waste particle pollution from the industries, etc., and cause of the temperature inversion. Then we discuss about the glycemic index and how low glycemic index is healthy than the high glycemic index. Low glycemic index includes millets, wheat, etc. Cracker ban, for cracker ban, we need behavior change among the people. Both the administration and people need to come together and think of the solution, the long-term process.
Then fire conservation, forest conservation. Forest conservation, we talked about that recently. The amendment was passed where the prior consent, which was mandatory, was removed, and it has led to the issue of rehabilitation and resettlement, and also the increase of human and animal conflict. So compensation must be given, and also the forest land definition must be adhered to by the Supreme Court. Then regarding this bill, it was for the single window clearance for the overall SCZ economy to increase the economic potential of the region. And one more fact which I learned, that is soybean is imported from Argentina and Brazil. Thank you. Okay. Okay, I will cover up now. So firstly, we talked about armed forces may reform, specifically in the context of the recruitment of the transgender people. So we talked about that there is a Transgender Protection Act 2019, and the recruitment should be on the basis of merit and the skills and not on the basis of gender. We talked about there are certain administrative challenges which do exist in terms of the number of toilets which are not existing. So these were the things around this. Then we talked about tunnel safety mein. So one method that we learned was the shot crate method. Jisme it is basically used to remove the debris from the tunnel. And then apart from this, from the perspective of tunnel safety, installation of alarms and alert system, that is important. That can also help in easy evacuation if there is any kind of disaster. Then we talked about PVTGs. So PVTGs, like in terms of numbers, there are 75 PVTGs in India, and PVTGs are the primitive tribes. So their safety, their declining population number is of concern for us from the perspective of welfare. Government is trying, administration is trying ki jo welfare schemes hai, like financial inclusion, dealing the problem of anemia, so that even from the perspective of healthcare, we are having the basic services available. Then insurance, Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana. So we are trying to reach to the last mile region and ensure availability of basic services to them. Then we talked about electoral bond scheme. We are seeing ki transparency ke liye they were introduced. So why it is not being applicable in case of the availability of information to the citizens through the RTI Act, and the case is still subjudized. So that would be taken up later on once we have the judgment. And then one important topic was the solar mini grids that we discussed today. So even strengthening ties with the African continent, so the solar energy can help us, and solar mini grids, they can play an important role. And International Solar Alliance, which is an initiative of India, that is important in terms of the self-reliance and domestic production. We are trying we are introducing the PLI scheme for that. We are ensuring ki jo cost disadvantage hai, that turns into a basically advantage. It becomes more cost effective in terms of manufacturing. And it basically, now the challenge for the implementation of solar mini grids is the cost. Somewhere we need around $500 billion. It would be helping in securing energy poverty challenge. And apart from the solar global facility was also discussed today. So that is important aspect. And functionality of basic services last mile region mein, these mini grids can play an important role. So these were all the topics that we took up, and thank you so much for joining us, everyone. So you can subscribe to Ansarkari, and we'll continue in this manner tomorrow.